to turn it. Turn it.
Welcome back, ladies and gentlemen, to ISF presents you a friendly match between Team Nepal versus Team India, and currently it's going to be a best of three series. This is the second friendly match that Nepal is playing, and when it comes to India, they have already been qualified to the regional qualifiers after all the trouble that they have taken, and right now we're going through knife round, and Team India has definitely secured it for themselves, which will be deciding this side. And today it's really special because we have a special caster as well, that is Tarun, aka Apcon. Hi Tarun, how are you feeling? Oh man, I feel great joining India and thank you for such a warm welcome, Elika. आज का दिन बड़ा इनक्रेडिबल रहने वाला है. टीम इंडिया वर्सेस नेपाल का ये मैच हमें देखने को मिलेगा. एंड वेल, विच बेटर मैप कुड यू आस्क फॉर? इट्स गोना बी द मैप ऑफ मिराज, जहां पे टीम इंडिया की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी सीटी साइड पे. एक क्विक क्लासिक रश भी का कॉल आया है. एंड टीम नेपाल, दे आर मेकिंग देयर वे इन टुवर्ड्स द ऐप साइड. देयर इज नो यूटिलिटी इन्वेस्टेड. यहाँ पे हमें एक डीगल देखने को मिल रहा है. ग्लॉक 18 है. डिंग जरूर थोड़ा पड़ा है, थोड़ी मुश्किल आई थिंक यहाँ पे हो सकती है स्पॉन के लिए, बिकॉज वो हेड डिंग की वजह से आई थिंक दैट्स अ टीम हेडिंग जो कि मिला है स्पॉन को. बट नॉनदलेस यहाँ पे ऑल म्यूट रियाल को फिलहाल के लिए डाउन किया गया. एक पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है टीम इंडिया का. नाउ द नंबर्स आर डाउन टू अ 3 versus 4 scenario. टीम नेपाल with the numbers advantage. Post plan scenario yet to come in. Yep, I think the bomb has been planted by Team Nepal, and right now Team India is giving their best to make that retake happen. It's going to be quite a difficult one since it's a 2v4-1. Although knife round going in favor of Team India, Team Nepal has the higher odds right now. One last person standing, that is SK. Wow, gets a double kill, almost down to a 1-1. Such a really good performance coming in from SK Wow over there. I should really give it up to him. I mean, he barely had any HP left on his body, less than 5 HP, and he still managed to get 2 kills. And that is how CSGO becomes game of miracles. But talking about the first round, incredible round coming in from Team Nepal, especially the fact that they started out T side. We know that Mirage is considered to be a little CT sided, and when it comes to strategies and everything, CT side definitely has an ace up their sleeve. But Team Nepal, great start to their match. एंड आई थिंक ये शुरुआत के बाद एलिका, टीम इंडिया मुश्किल होगी वो बाय राउंड के लिए. बिकॉज इन मिराज, इन एनी मैप, यू नो, कंसिडर सिटी साइड एक ऐसा साइड है जहाँ पे वो जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है. जो मोलोटोव आप टी साइड पे $400 का बाय कर सकते हो, वही आपको इंसेंटिनरी के नाम पे $600 का यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर द सिटी साइड. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, you have the helmet which is kind of just useless when you're up against these AK-47 का एक सिंगल हेडशॉट भी आपको 107 से 118 का डैमेज देता है. सो दैट इज समथिंग जहां पे वो हेड आर्मर एंड केवलर वेस्ट का इन्वेस्टमेंट थोड़ा, यू नो, मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट बनता है. टीम सीटी को मेक श्योर करना है कि उनके पास एक डिफ्यूजल किट भी हो. यूटिलिटी के साथ साथ उन्हीं का एक ऐसा राइफल है जो कि आपको AK से भी एक्सपेंसिव देखने को मिलता है. सो आई थिंक टीम सीटीज एक बहुत अच्छा कॉल बन सकता था अगर वो सेव करते. बट यहाँ पे टीम इंडिया फोर्स बाय का यहाँ पे निर्णय लिया. आई डोंट नो, बट आपके क्या थॉट्स होंगे इस बारे में, लेका? I mean, it was pretty much expected that they will be going in for an eco, considering the fact that they've lost the first round. But upgraded pistols do make miracles sometimes, especially the fact that it's a deagle. Deagle can be really deadly sometimes. And Team Nepal दूसरे हाथ पे वो फुल पैक कर चुके हैं, 2 गलील, एक्चुअली 3 गलील और 1 AK के साथ. And right now there's been 1 frag down already by Team India, but their last person standing, Nikes, who's trying to approach towards the A main. He has a deagle in his hand, finds one player, puts a beautiful bullet in his head, and right now with the Galil, I don't think he'll be able to put much of a performance, but he does have half armor. Nonetheless, Auras will be taking up the last kill on towards Team India, and that is round number 2 for Team Nepal. And this round is going to be very crucial, Tarun, for Team India, because उन्होंने अभी तक तो eco पे गए थे, but right now they have the economy to invest. But they probably won't, because they bought upgraded pistols in the last round and they can't afford to go for an SMG and haven't done enough damage for Team Nepal. They'll be going in for another eco, which is in turn giving out a huge advantage for Team Nepal.
एंड here's where I think लॉस बोनस रीसेट हो चुका है 2400 पे। तो एक AWP का इन्वेस्टमेंट करना फायर्ड अप या एसके वाव के लिए इतना इजी अगले राउंड पे नहीं हो पाएगा। आप जानते हो कि इस मैप पे मिड कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। टॉक अबाउट द मिड कंट्रोल, कनेक्टर का ऑलरेडी प्ले यहाँ पे डीलर बना चुके। टिकट पे यहाँ पे फिलहाल एक प्लेयर को डाउन किया गया, बट उसके बावजूद यहाँ पे एसके वाव ट्रेड लेने में कामयाब होते। 4 वर्सेस 4 का सिनारियो, एक गलील यहाँ पे जरूर रिट्रीव करना पॉसिबल हो पाया, बट व्हाट अ किल, एक बहुत मैसिव किल मिला है। ए साइड इज टोटली ओपन फॉर बिजनेस, a 2 versus 4 scenario, and Nick Ace comes up with a fine headshot, retrieves an AK for himself. It's a 2 versus 3. बॉम्ब अभी भी आपको डाउन होते हुए नजर नहीं आए। ए साइड का पूरा कंट्रोल है, बट लुक आफ्टर क्लाउडा, क्लाउडा इज ऑल द वे टुवर्ड्स द टी स्पॉन। ये एक बहुत बड़ा पिंच पॉइंट बन सकता है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे JDX का पोजीशन देखो तो ही स्टिल इनसाइड द मिड पोजीशन। एक प्लेयर जो कि आपको रियाल देखने को बिल्कुल बहुत यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन है, बट उन्होंने एक बहुत मैसिव किल निकाल के रिकेस को डिनाई किया। इट्स ऑल डाउन टू क्लाउडा विद जस्ट अ P250, एंड P250 से एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेन पुश, गेट्स द फर्स्ट किल, बट ही हैज नो वेपन्स। 1 versus 1, एंड JDX कैसे भी इस इको राउंड को अपने द्वारा मेक श्योर करना होगा कि जीत पाए, बट क्लाउड ऑलरेडी स्पॉट कर चुके करेक्टर पे। बहुत ही अच्छा फ्लैश, समय नहीं है, इसी के साथ साथ उनके पास डिफ्यूजल किट भी नहीं होगा, जिस वजह से ये राउंड आपको जाते हुए देखने को मिलता है। टीम नेपाल, बट इंडिया ने बहुत एक्सपेंसिव बनाया पे नेपाल के लिए। ऑलमोस्ट इट टुक ईच एंड एवरी वेपन ऑफ द हैंड ऑफ टीम नेपाल। Yeah, definitely a great damage done to Team Nepal's economy. But coming back, Team India has also built up their economy, which is again their first round in this map as a full buy. And yet I see 2 ops coming in the hands of Team India, which can be huge, which can be really crucial if they lose this round, and they definitely shouldn't. Team Nepal, on the other hand, they have an op and a 4 AK buy, which is of course considered as a full buy, but I'm still looking forward for how Team India is going to take this into consideration. And the fact that there is no op in mid, but they have chosen 2 ops, I think it's worth it, because Fired Up with an opening and SKWow along with Fired Up taking another entry, another kill for Fired Up coming in through. It's going to be the battle of ops between both the teammates, Fired Up and SKWow. But Dog Nipples, on the other hand, gets that headshot on towards Fired Up, which is the first frag on towards Team India, by the way. I really have a feeling, Taru, that this round is in huge credits to Team India. And even though they lose a frag or 2, I think they are still on the winning side. बिल्कुल मैं तो सरप्राइज हूँ एक डबल ऑप सेटअप से, जो कि बी पे बिल्कुल नहीं, मिड एंड ए पे पोजीशन किया गया। एक ऑप से तो छुटकारा पा लिया, बट अभी भी यहाँ पे दूसरा ऑप आपको एसके वाव के हाथों में देखने को मिल रहा है। शॉट मिस हुआ एसके वाव द्वारा, लेग शॉट कनेक्ट हुआ है, बट उसके बावजूद यहाँ पे अपने द्वारा सेकंड शॉट पे मिस नहीं लाएंगे। एंड अब इट्स ऑल डाउन टू JDX, जिन्होंने 2 बड़े किल्स निकाल के इस 1v4 को 1v2 में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिए है। पोस्ट 5 सिनारियो में अब यहाँ पे एक खिलाड़ी को पहले कनेक्टर से छुटकारा पाना होगा। नेड इज गोना डू द डैमेज, एंड यस इट डज, बट उसके पहले निकेस आएंगे एंड यहाँ पे अपने द्वारा एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके पहला राउंड टीम इंडिया को जिता देंगे। एंड ये एक बहुत बड़ा राउंड रहने वाले। टीम इंडिया दे विन देयर वेरी फर्स्ट राउंड, एंड आफ्टर दैट लेट्स सी कि क्या यहाँ पे जो ट्रेल ऑफ राउंड्स है ये बन पाएगा कि नहीं। बिकॉज एक चीज जिसके बारे में हम शुरुआत पे बात कर रहे थे, सिटी साइड की इकोनॉमी ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। अभी आप अगर फायर अप की भी परिस्थिति देखिए, ड्रॉप अगर AWP का नहीं मिलता उनको, तो फिर वो शायद आपको वो हेलमेट एंड केवलार वेस्ट पे देखने को नहीं मिलते। अभी भी 5 में से 3 ऐसे खिलाड़ी जिनके पास सिर्फ केवलार वेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ डाइसी, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अप अगेंस्ट दीस मैक 10, जो कि एक 78 का डैमेज क्लासिकली आपको दे देंगे सिर्फ उस केवलार वेस्ट पे। Yeah. A lot of calculations by AppCon in terms of economy, which is really, of course, helps us understand where the game is going to be. But on the other hand, I think Team India is making it all happen over at the B-bomb site. I've already taken 2 players of Team Nepal. It's a 3v3 situation, and the odds are in the hands of Team India with 2 ops and 1 M4 in the hands. On the other hand, we have 2 Mac-10s coming in from Team Nepal, both the players down to less than 20 HP, and the op is just waiting for someone to walk into the crosses of SKWow or Molotov coming in, which is a very good move, by the way. On the other hand, Fired Up gets a frag on towards the bomb site. The bomb is already been planted. It's Team India who has to make the push right now. One is over towards the van, who will be getting taken down by Fired Up, and one last person standing below the app, and he's down to very less HP, and he'll get spotted, he'll get taken down, and that's another round for Team India. Fantastic comeback coming in from Team India. And
एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक ऑप तक अभी तक खोया नहीं है, बिकॉज ऑप इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड वन पर्सन बाइंग एन ऑप कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर टीम, बट राइट नाउ वी हैव टू ऑप्स व्हिच इज अ ह्यूज डील फॉर टीम इंडिया। आई मीन बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों ऑप के आप देखिए, दोनों पिछले 2 राउंड्स में ऑलमोस्ट इन 2 ऑप्स बार आपको 8 किल देखने को मिल चुके हैं। आई थिंक पिछली बार 3 से 4 किल आते, इस राउंड में भी रीटेक के लिए एक ऑप के द्वारा बहुत ही ज्यादा सफलता मिली यहाँ पे फायर्ड अप को, एंड ही इज ऑलरेडी अप विद लाइक 4 KD, लाइक दैट्स रियली लुकिंग प्रीटी अमेजिंग। बट दिस इज गोना बी अ क्लासिकल पिस्टल अपग्रेड राउंड। इकोनॉमी रीसेट है 2900 पे, तो इस इकोनॉमी के रहते आई डोंट थिंक कि ज्यादा रिस्क लेना चाहा यहाँ पे टीम नेपाल ने, एंड एक बहुत अच्छा निर्णय। बट उसके बावजूद एसजी जो कि आपको एक स्काउट वेपन देखने को मिलती है, उससे फायर अप को डाउन करेंगे, बट एसके वाओ विद अ ट्रेमेंडस हेडशॉट। एक डाउन जेडीएक्स, स्टिल नंबर्स यहाँ पे फेवर में आपको टीम इंडिया के देखने को मिल जाते हैं, बट क्लाउडा फॉल बैक करना चाहेंगे कैटवॉक से, बिकॉज़ बहुत रिस्की पोजीशन पे थे। ऑलमोस्ट अ क्विक स्कोप फ्रॉम एसके वाओ, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू ऑरिस, जिनके पास एक एसजीएन, उसके बावजूद 3 किल निकाल चुके हैं। ये खिलाड़ी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है टीम इंडिया पर। उसके बाद निक एज फाइनली उनको डाउन करते हुए बहुत महंगा रहा यहाँ पे टीम इंडिया के लिए, बट नॉनदलेस उनको यहाँ पे एक बार फिर बाय करने से तो यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। दिस टाइम टीम नेपाल दे आर गोना ब्रिंग दीज AKs आउट। 3 ऑल का स्कोर लाइन ऑलरेडी बन चुका है, एंड अब 9 और राउंड रिमेनिंग इस हाफ में। Yeah. जैसे कि मुझे लगता है कि राउंड के बाद टीम इंडिया बहुत ही अच्छा राउंड्स निकाल रही है, एंड मोस्ट स्पेशली द फैक्ट दैट दे हैव गॉट 3 राउंड्स बैक टू बैक, एंड टीम नेपाल्स इकोनॉमी will not go, is definitely not in the right direction. If they lose this round, they might not be able to even go for a semi bye in the next one. Fired up again, a very fired up shot coming through the apps. One player down from Team Nepal. Don't worry, there's a couple of players over towards Tetris, but they have been forced to go back into the A main without taking any tag, which is a good fallback coming in from Team Nepal. Again, 2 ops with Team India, and I have a feeling that Team Nepal might go for a mid to B, or maybe come back and do a overall push at A bomb side. But currently the position advantage is headed over towards Team India. Definitely they have 1 player over towards connector, they have 1 player handling CT, they have 1 player handling jug, but that is more than enough. But no one's watching connector, and Chalk Tira Wizard will definitely take the advantage of it, gets a double kill, beautifully killed. 1 towards triple and 1 towards short, both of them taken down, but Eskewa and Spawn answering back to Team Nepal, while Choktira takes a triple kill, and last kill coming in from Eskewa, making it happen for Team India. 4 rounds back to back. मुझे लगता है ना तरुण की टीम इंडिया हमेशा पहले अपने ओपोनेंट्स को पढ़ने की कोशिश करती है, उनकी स्टैट्स लेने की कोशिश करती है, and they put a huge effort to counter it, and they are definitely countering the stats of Team Nepal. आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो होने के बावजूद टीम नेपाल क्लोज आउट नहीं कर पाई। विजार्ड के 2 मैसिव किल, बट ये देखिए ये इस 2 डबल स्काउट का इन्वेस्टमेंट था, ये बहुत ज्यादा रंग लाई, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑपर को डाउन कर दिया, दूसरे ऑपर को भी डाउन कर चुके हैं। याद दिला दूं कि दिस इज गोना बी वन ऑफ द इको राउंड्स, बट स्मॉन एंड क्लाउडा कम्स अप विद द रिस्पांस। नाउ इट्स डाउन टू 3 मोर प्लेयर्स। अपग्रेड करने का मौका मिला है आपको जेडीएक्स के हाथों में, आपको AWP देखने को मिल रही है, बट बॉम्ब को प्लांट करना ये अभी भी चैलेंजिंग होगा, बिकॉज वो तो मिड पे रह चुके हैं। अभी मिड से ए तक का यहाँ पे सफर तय करना होगा डीलर को, एंड फिलहाल उससे पहले क्लाउडा से छुटकारा पाना ये इजी नहीं हो पाएगा। आई थिंक टीम इंडिया बहुत अच्छी रिकवरी कर पाई उस डबल ऑफ सेटअप को लूज आउट करने के बावजूद, बट टीम नेपाल व्हाट अ ग्रेट मिड कंट्रोल। आप बात कर रहे थे पिछले राउंड में कि या तो आप एक मिड टू बी पोस्ट करो तो आपके लिए शायद सक्षम हो, या फिर एक टोटली ए अग्रेसिव, बट ए अग्रेसिव आने के लिए वो ए स्मोक्स का इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिला, तो इट वाज अ कंप्लीट इको। That mid play really panned out to be so great from the start of Team Nepal, as now Team India वो डबल ऑप सेटअप को गंवाने के बाद सिर्फ एक ऑप रिकवर कर पाई है। इस एक ऑप के सेटअप पे आई थिंक जरूर एक बहुत अच्छा सक्सेस यहाँ पे मिल सके। एक क्विक एग्जीक्यूशन टुवर्ड्स द मेन, fired up and Spawn gets 2 kills respective to themselves, but now it's down to only 2 players remaining from Team Nepal, and I think the round is long gone over. Yeah, I mean we're close to it, but we still have JDX who's trying his level best to get that round back for Team Nepal, but not really 4% chance according to CS stats in a 1v4 situation.
highly impossible, but where there is a will, there is a way, and miracles too oftenly happen in CSGO. At this point, I feel like JDX should go for the save, and once if the bomb gets spotted out, it's going to be hunt for JDX. Two of the players, they're standing very close to each other, fired up, and JDX, I think he's going to go for a slow peek onto his teammate. Fired up, spots him out, but gets taken down. And that's JDX getting first frag and the second one as well. Quickly switches to the weapon, comes back to AK. 14 out of 30 bullets. Nikes, on the other hand, is holding connector, but Spawn will come through and sweep JDX out of the server, making it 6 back-to-back rounds for Team India. Really great momentum coming from Team India and Team Nepal right now. They have to stand up for themselves. They have to get around, or the entire first half is going to be in the favor of Team India. And I think to add things up to that, टीम इंडिया एक 0-3 के बावजूद जो एक 6 राउंड की विन स्ट्रीक पे ये मोमेंटम को अब लूज करना इतना इजी नहीं हो पाएगा. वंस अगेन क्लासिक रश भी, बट अंडरपास का कंट्रोल ये समय पे लेने की कोशिश की जा रही है. देखिए डीलो अंडरपास का पुश यहाँ पे पहले कंट्रोल करना चाहेंगे. एप्स का एग्जीक्यूशन पिछले 4 राउंड्स में तो हमें देखने को नहीं मिला. पिछली बार ए एग्जीक्यूशन था, उसके पहले मिड, एंड उसके पिछले 2 बार इट वाज जस्ट अ क्लासिक एम इन कंट्रोल. बट दिस टाइम इट्स द फर्स्ट टाइम कि पिछले 4 राउंड्स पे आपको यहाँ पे बी पे प्लेयर्स आगे आते हुए देखने को मिल रहे हैं. टीम टेररिस्ट दे नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे अपने द्वारा एटलीस्ट वो पिक्स पे पहले खेल पाए, क्योंकि अगर आप पे नंबर्स एडवांटेज है, एक पोस्ट प्लांट सिनेरियो में होल्ड कर पाना सीरीज को बहुत आसान होगा. बट इस समय पे निकेस बहुत अच्छा ऑफ एंगल ढूंढेंगे, एंड पहले विंडो से ही यहाँ पे जो है जेडीएक्स को फिलहाल पिक ऑफ कर चुके हैं. Pam looking really promising, but अपने आप को भी बचाना होगा. At the same time, India को डाउन करके numbers advantage पे टीम इंडिया down to a 5 versus 1 scenario. एक आखिरी खिलाड़ी रियाल with the A. Okay, it's a scout though. ब्रांचिंग एक इको राउंड पे थोड़े तो भी यहाँ पे क्लिप लेकर निकाल पाए, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल डैमेज आ सकता है. सो फार टीम इंडिया जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जो मोमेंटम हाथ लग चुके हैं उनको, यहाँ से टीम इंडिया को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है. टीम नेपाल देखिए really desperately need to work on through some strategies, you know, execution which is going to be some smoke execution, या फिर आप एटलीस्ट पैलेस कंट्रोल लो. आप मिड पे जो ऑप यहाँ पे आपको फायर अप द्वारा देखने को मिल रहा है उसको डाउन करो. मे बी देन दी ऑप्शन स्टार्ट्स टू ओपन अप फॉर देम. Yeah, definitely well said, Tarun. That was a very briefly explained details about what's currently happening in the game, but I really have a good feeling that Team India, जिस तरह से performance दिखा रही है, they will maintain this aggression throughout the first half. And only second half is a chance for Team Nepal to build up their economy. So far, fired up, missed 2 shots, 3 shots, and Nepal had more than enough chances to fall back or go aggressive, go rogue on Team India, but currently they'll still be holding on top mid. I feel like Fired Up already has the info that this one player top mid, he goes out to the peak, but is taken on with JDX. He's missed more than enough shots in this round. Clouda gets a beautiful kill on towards JDX, an immediate trade coming in through Team Nepal. Pawn gets one more, which leaves us in a very difficult situation. But look at Clouda's position. A very smart position. But Choktira is already waiting Clouda to just walk out of the ladder room. And the moment he does, he will get taken down. Beautiful communication coming in from Team Nepal. All they have to do is just finish this round in a well-coordinated manner. It's a 3v2 situation. There's one player over towards B who's already pushed up the apps, and one player over towards the spawn, and that is Spawn waiting for Team Nepal. The bomb will be getting planted down shortly, and I think Spawn is gonna push A main. He spots one player, he takes one down, he immediately is trying to push down to the side. On the other hand, we have the other player falling back into the spawn as well. So it's 2 players in A main. Tarun, आपको लगता है कि ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए टीम इंडिया को, दोनों प्लेयर्स A main से? अनएक्सपेक्टेड जरूर रहेगा, क्योंकि पहले पिक के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरे खिलाड़ी सीटी पे रहे, बट उसकी शायद जरूरत ना पड़े. ये चीज बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल बनी, क्योंकि टीम इंडिया डेफिनेटली आपको सीटी को यहाँ पे पूरी तरीके से टेक केयर करना है. जंगल एरिया आपका खाली है, कनेक्टर से भी स्टेज तक यहाँ पे जो है जगह बना सकती थी टीम इंडिया, बट जहाँ पे इन 3 एंगल से पैरानॉइड थी टीम नेपाल की, इतने सारे एंगल्स, अगर 2 खिलाड़ी है तो वो 3 एंगल्स को कैसे होल्ड ऑफ करे. चौथा ऑप्शन चुना टीम इंडिया. दोनों खिलाड़ी एमेन से आके अपने द्वारा एक राउंड सिक्योर करके टीम नेपाल के लॉस बोनस को मैक्स आउट कर चुके हैं.
अब यहाँ पे जो 3400 का लॉस बोनस है उससे ज्यादा बोनस उनको नहीं मिल सकता राउंड हारने पे। एंड इस समय पे आई थिंक अगर राउंड हारती भी है टीम इंडिया तो वो लॉस बोनस डायरेक्ट 1900 पे कहीं ना कहीं रीसेट हो सकता है। तो लेट्स सी, अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 4 राउंड्स रिमेनिंग आपको देखने को मिलेंगे। इन राउंड्स में कुछ ना कुछ कमाल दिखाना होगा। क्विक कैट कंट्रोल निकेश को डाउन करेंगे, बट ऑरिस कम्स अप विद अ गुड ट्रेड। क्लाउड अप टेक्स डाउन ऑरिस, तो नंबर्स वर्किंग स्टिल गुड इन द फेवर ऑफ टीम इंडिया। 3 वर्सेस 2 में अभी भी यहाँ पे जा रहे हैं तो टीम नेपाल बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू डीलर द्वारा एंड बैक टू बैक 2 किल्स के साथ इस 1 वर्सेस 3 को 1v1 में ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। अब जो आखिरी खिलाड़ी है टीम इंडिया से वो अंडर पास की पोजीशन से यहाँ पे ही इज ऑल द वे टुवर्ड्स शॉट, जंगल एरिया से जरूर पुश ऑन कर सकते हैं, बट क्योंकि एक AWP सेटअप नहीं है आई थिंक ये रीटेक थोड़ा इजी बन सकता है। एंड फाइनली टीम नेपाल एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, एक होप दिख रही है कि वो यहाँ पे अपने द्वारा जरूर एक राउंड को सिक्योर करे, बट मॉली आएगी फायर बॉक्स पे, इंस्टेंटली स्मोक करके अपनी पोजीशन से रिवील कर चुके। एक 1 वर्सेस 1 का सिनारियो, दिस इज अ गुड मॉली, बट ये मॉली उनके अगेंस्ट पे चले जाएगी। डिफ्यूजल कहते हैं 1 सेकंड और आई थिंक दैट्स गोना बी अ डिफ्यूज। यस इट इज, जीलर डू टेक्स हिम डाउन, बट उसके पहले समय नहीं रहा एंड क्लाउड विद द डिफ्यूजल किट गेट्स द राउंड फॉर टीम इंडिया। एंड मैन, नेपाल को उन्हीं के मोलोटॉव में पनिश किया गया एंड दैट वाज रियली द मोस्ट ब्रूटल वे टू विन अ राउंड इन अ 1v1। Yep, indeed. And Team India never fails to surprise us with their unique ways of approaching the game. And yet again, the proof was in this round. I mean, the previous round, amazing performance coming out from Team India. I am really, really impressed. The first 3 rounds, I was lost in uncertainty thinking about how Team India is going to tackle Team Nepal. But nope, not only have they tackled Team Nepal, right now they are shutting Team Nepal down. Nikesh already opening up a beautiful frag on towards JDX. It's the game of time right now. Team Nepal barely have any rounds left. Last 3 rounds until the first half finishes. And it's a best of 3 series. If one map goes into the favor of Team India, the probability of Team Nepal winning might go less. Considering the fact that even if they do win second, it's going to be a decider map coming along the way. Fired Up is holding off a really good angle. And the moment Upcon dealer walks in, I think he's just gonna be punished. बिल्कुल, आई थिंक कनेक्टर का कंट्रोल लेना तो बहुत अच्छा सोच है। ये देखिए विजार्ड को डाउन किया गया। आई थिंक डीलर जिसकी आप बात कर रहे थे अच्छा डैमेज था और उसने यहाँ पे अपने द्वारा किल कंफर्म किया। एसके वाव के हाथों में अभी भी आपको ऑफ देखने को मिलती है। क्लाउडा विद द शॉर्ट पोजीशन गेट्स ऑरिस थ्रू द स्मोक स्पैम, सो दैट इज सो इलीगल दो, बट एसके वाव इनकी ऑफ को यहाँ पे कुछ कमाल जरूर दिखा रहा होगा, वरना यहाँ पे आई थिंक ये रीटेक इतना आसान नहीं होने वाला जितना लग रहा था। कि 2 वर्सेस 2 का रीटेक सिनेरियो फिलहाल देखने को मिल रहा है। ऑफ के बावजूद यहाँ पे पहला किल मिल चुका है, बट चलिए ओनली गुड फॉर 1, इट्स अ 1v1 सिनेरियो। इट्स डीलर अप अगेंस्ट द साइड ऑफ क्लाउडा। डीलर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज डील कर चुके, देयर इज नो यूटिलिटी फॉर क्लाउडा। I think raw aim is important है, bench पे hold करते हैं डीलर देखने को मिल रहा है, but the spam is gonna look beautiful. Now he's down to only 14 HP. He wants to fake it, but dealer's not falling for it. He's all set to secure the round and it's 1v1 pay. Whiff comes all along from both of these players, but the time runs out and it's gonna be the first round for Team Nepal. पिछले 9 राउंड बैक टू बैक टीम इंडिया जीत चुकी है एंड उसके बावजूद वो जैसे 10th राउंड की स्ट्रीक कंप्लीट होने वाली थी, टीम नेपाल they finally secured it and what a much needed round it was. सिर्फ 2 आखिरी राउंड रिमेनिंग एंड एक 6-9 स्कोर लाइन की डेस्परेट हाफ की नीड है टीम नेपाल को अगर सेकंड हाफ पे कमबैक की उम्मीद चाहिए उन्हें तो। Yep. Team Nepal not just have to make a comeback, they have to go beyond the points of Team India. And I think the task is definitely difficult for Team Nepal. वैसे आखिरी के 2 राउंड बचे हैं तरुण until the first half finishes. And eventually when they go to the second half, they might have a really good advantage. I think Mirage map में T side से 5 to 6 rounds is more than enough for you guys to make a comeback in CT. And of course, considering the fact that Mirage एक CT saddened map है, तो टीम नेपाल के लिए आसान होना चाहिए. But they still have to make it a worthy fight in the first half against Team India. And जबकि मैं बात करूँ Team India की economy के बारे में, I think they can go for a full buy. 3 M4A1 और 1 M4A4A. I'm pretty sure that SKO drop ले सकते हैं Clouda से. And yup, I think Clouda will be giving a drop in. He's kind. Yeah. Of course. Having I a mean, teammate like Clouda is always a +1.
Yeah, I mean, surely unlike you and one of those random matchmakings, but Yes. finally unpause हो चुका है. एक लॉस वो जो हार मिली टीम इंडिया को सिर्फ $1,900 मिले उनको, और उनकी पूरी जो 9 राउंड्स की विन स्ट्रीक थी. अब देखिए उनकी इकोनॉमी, इट्स ऑल डाउन टू $1,550, $200. लाइक दैट्स टोटली स्क्रैम्बल. एंड एक सीटी साइड पे होने के लिए सिर्फ 2 डिफ्यूजल किट आपको देखने को मिलते हैं, एक स्पॉन पे और एक क्लाउड अप. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट CSGO, आप हर एक चीज ड्रॉप कर सकते हैं अदर देन योर नाइफ एंड डिफ्यूजल किट. तो 2000 होने के बावजूद स्पॉन इज द ओनली वन विद द डिफ्यूजल किल अलोंगसाइड क्लाउड, बट एसके वाओ कमिंग अप विद द फर्स्ट वन. कनेक्टर से क्विक पुश किया, टॉप मिड पे पहला किल निकाल चुका है टीम नेपाल को फोर्स किया सिर्फ 4 खिलाड़ियों के साथ अपने बी एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए. बट निकेस उसमें भी रोक लगाने के लिए बहुत अच्छी यूटिलिटी डंप कर रहे. पहले यहाँ पे इंसेंडरी का इस्तेमाल और अब एक हेवी नेड. ये हेवी नेड आई थिंक थोड़ा डैमेज करेगा. जी बिल्कुल, यहाँ पे रियल को 67 HP पे डाउन कर दिया. डबल नेड यहाँ पे किया गया. एंड टीम इंडिया, दे आर रीडिंग दिस सो वेल फॉर टीम नेपाल. Yeah. Currently, Team Nepal is definitely in a difficult position. They are planning for a push, but unfortunately, one of their players is still held back. And on the other hand, Team India is spotting out players over towards B shot, which will be another kill for Team India. And Team Nepal still stuck over towards the apps, will go for that push on towards the side, but Cloud and Nikhil are just gonna put an in stop, full stop to Team Nepal, and Team India makes it to the double digits on the 14th round. And currently, the last round in the first half, either Team India 11-4 करेगी, नहीं तो नेपाल ये राउंड जीत के 10-5 करेगी. बट जैसे मैं देख सकती हूँ, टीम नेपाल के पास ज्यादा क्रेड्स नहीं है. They don't have much economy to work with, so they're just gonna buy a scout and couple of AKs with a Galil. SMGs do come to use, but not in a very important round like the last round in the first half. Ooh. But AK is definitely making some wonders happen over there. Dealer gets first, Dealer gets the second one. Incredible opening coming in from Team Nepal. 3 kills back to back. They have an advantage right now, but Fired Up is back in the action as well. Puts a grenade, gets spotted out, gets taken down by Wizard. Wizard with the 2K, Dealer with the 2K. Nick is trying to make his way over towards the bomb side through jungle. Gets 1. बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है. 1v2 है, एक बैक स्टैब से आते हुए 41 HP है बस निकेश के पास, एंड अनफॉर्चुनेटली वोंट बी एबल टू क्लच इट. बट टीम नेपाल ऑन द अदर हैंड 5th राउंड लेके जा रहे हैं, एंड पहले हाफ में लीड टीम इंडिया के पास विद 10 राउंड्स एंड 5 फॉर टीम नेपाल. बट आई शुड डेफिनेटली से दैट निकेश has been putting a lot of efforts. He's on top of the leaderboard right now with 16 kills. I mean, what a great half it was, man. Team India 3-0 down, फिर 9 राउंड की स्ट्रीक. टीम नेपाल वो जो आखिरी 3 राउंड्स में 2 राउंड उन्होंने लेके 6-9 नहीं बट एटलीस्ट 10-5 का स्कोर लाइन सिक्योर किया. अभी भी एक पिस्टल राउंड जीतने पे एक सिल्वर लाइनिंग है, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि अगर टीम इंडिया आपको इतनी स्ट्रॉन्ग एक सीटी साइडेड मैप पे यहाँ पे देखने को मिल रही थी 10-9, तो हाउ वुड द टी साइड लुक. ऑलरेडी मिड पे डीलर को डाउन किया गया. हम बात करें कि डीलर का मिड प्रेजेंस जो हमें देखने को मिला थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ, ही हैज बीन रियली पॉपिंग ऑफ. वो मिड का कंट्रोल, वो मिड के किल्स निकालना इतना आसान होता नहीं जितना डीलर यहाँ पे निकाल पाए. बट वैन की पोजीशन पे देखिए 2 स्पॉट्स पे यहाँ पे होल्ड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं. एंड रियल ऑलरेडी पहला किल निकाल जाएंगे क्लाउडा पे. तो टीम इंडिया अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करेगी. 3 वर्सेस 4 का सिनेरियो एंड पोस्ट प्लान सिनेरियो जब तक नहीं आएगा तब तक राउंड हारने पे अगले राउंड पे वो ट्राई करना तो देखिए आपको अपोज नहीं करेगा. बट रियल को फिलहाल के लिए प्री फायर देते हुए फायर्ड अब निकेश को भी डाउन किया. निकेश भी अपने द्वारा एक किल निकालेंगे. नाउ डाउन टू ओनली 1 प्लेयर. पहला हेडशॉट, दूसरा हेडशॉट, 2 बैक टू बैक हेडशॉट के पास और is down 2 of 3. Still 1v1 but Nikesh turns him down. Slow down किया उन्होंने इस पूरे मुकाबले में, वरना ऐसा लग रहा था कि ये अब तक का सबसे बेस्ट 1v3 क्लच हम यहाँ पे देख पाते. बट टीम नेपाल, what a great retake scenario coming in from Oris to crispy headshot. बट उस आखिरी हेडशॉट में थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मैं कहूंगा कि निकेश अपने द्वारा आउटप्ले कर गए. बट चलिए टीम इंडिया पिस्टल राउंड जीत के अपने द्वारा 11th राउंड ऑन बोर्ड ला चुके हैं. एंड हियर वी गो, ऑल AKs आउट अगेंस्ट दीस डीगल. Yes, definitely. मुझे लगता है कि डीगल भी बहुत ही कुछ कर सकता है. टीम नेपाल काफी बढ़िया से ओपनिंग फ्रैग निकाले हुए क्लाउडा के ऊपर, बट एन इमीडिएट ट्रेड कमिंग फ्रॉम टीम इंडिया एज वेल. कोई बात नहीं, आई थिंक बैक टू बैक ट्रेड्स फ्लाइंग थ्रू, सो बोथ द टीम्स डेफिनेटली शोकेसिंग दैट
desperately looking for a win in this match. A close quarters white pick coming in from Wizard, which will work in his favor. He gets another kill, but fired up on the other hand, gets killed Nikki, and so does Nikes. And right now, Nick is getting the second one for his team. Is left in a very difficult position. 1v1 situation है यहाँ पे. Luckily, Nikes के पास bomb है, तो वो B पे plant करने जा रहे हैं. And on the other hand, we have Wizard from Team India. Sorry, Team Nepal, who also has an AK at the moment. It's always interesting to see an AK versus AK fight. I really want to know how Wizard tackles the situation. I think थोड़ा मुश्किल देखिए जरूर होने वाला है because he doesn't know any angle to work with ladder रूम के विंडो को तोड़ने के बाद ऐसा लग जरूर रहा है निकेश को कि ladder रूम से आएंगे बट चलिए बहुत सही मूवमेंट पे पीछे देखा विजार्ड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बट टीम इंडिया अपने इस बाय राउंड पे कैपिटलाइज करेंगे पिस्टल राउंड जीतने के बाद वो बाय राउंड बड़ा सक्सेसफुल रहा बट टीम नेपाल वो जो डैमेज करना चाहते थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं नाउ दे हैव दिस M4s out they have an AUG M4A1 and M4A4. Which one would you choose, Alika? Because if you ask me, I would go for the A4 for 5 additional bullets. I would definitely go for A1 because it sounds. I know it's definitely not a reason to why you would pick a gun, but CSGO is of course a game of so many guns with SMGs and rifles including. So I would prefer M4A1 any day because the recoil also it has. But coming back to the game, Team India with 12 rounds and Nepal with 5 fired up a great opening into the bomb site. Wizard still holding off the connector. He has an M4A1 as well. Luckily, fired up with just a Galil. I don't think he'll be able to take that fight. But he was gonna shift towards jungle. He will get taken down, leaving one last player, JDX, over towards the connector. 4 HP left and Spawn will get that kill. 13 rounds for Team India. They're just 2 rounds away from getting that match point, Tarun. I mean, Team India, they're looking, like too strong. Like T side पे अब तक एक भी राउंड नहीं हारा उन्होंने. चाहे वो पिस्टल राउंड हो, चाहे वो एक एंटी इको जो कि हमें दूसरा राउंड देखने को मिला था. पिछले राउंड अगर आप बात करो, एक बाय राउंड था. इस बाय राउंड पे हमें ज्यादा वो मिड फाइट्स देखने की नहीं मिली. अगर टीम इंडिया चाहती है कि वो बी पे जाए तो पांचों बी पे जा रहे, ए पे जाए तो पांचों ए पे जा रहे. वो दैट वाज अ बिग ब्लॉकेज. बट चलिए अभी सारे खिलाड़ी they are going to make their way in. This is going to be a very difficult one. Team Nepal, they don't have any utility. तो utility ना होना टीम इंडिया को रोक भी नहीं पा रहे. टीम नेपाल की वो एटलीस्ट मॉली का इस्तेमाल करके थोड़ा समय बाय आउट करे. रोटेशन जल्द से जल्द है बट एटलीस्ट ये डीगल्स कुछ कमाल कर सकते हैं. टॉक अबाउट द डीगल, रियाल ऑलरेडी स्पॉन को फिलहाल टेक डाउन करते हुए नजर आ रहे. फायर्ड अप पुशेस ऑन टुवर्ड्स द कैटवॉक, गेट्स 2 for himself. It's down to only 3 players of Team Nepal. इको राउंड है, पहला किल ऑलरेडी मिल चुका है बट एक 4 versus 3 के रीटेक पे पीछे से ऑलरेडी फायर्ड अप लग आ चुके हैं. फायर्ड अप मार्केट पुश करेंगे. पहले खिलाड़ी को तो देखिए पा चुके बट JDX comes up with the trade. Now it's down to only one single player. रियाल किंग फॉर अ 1 versus 3 clutch. 2 खिलाड़ियों को डाउन करके इट्स ऑल डाउन टू वन सिंगल प्लेयर बट उनके पास डिफ्यूजल किट नहीं है. समय का खेल होने वाला है. मॉली के बाद तो इट्स जस्ट अ बिग आई से like fire on your wound and this is gonna hurt. Not just it's gonna hurt but it's gonna burn your wound. If you're Team Nepal and Team India, they're looking as strong as ever in this match, and especially when it comes to Mirage. Yes, Mirage so far is nothing but a very huge advantage for Team India. Also, funny fact that Mirage is actually Nepal's pick. Nepal had a chance between to choose from Overpass and Mirage and they banned Overpass, which eventually led them to pick Mirage. And even on Nepal's pick, Team India is performing really brilliant, especially with the calls. And we also know for a fact that Team India is good with all of their players on an individual skill set as well. And Team Nepal, as a team, they are showcasing the best talent as they can, but they have to go for those individual pushes. They have to put a flanker down there on the other bomb side who can be of value. And right now, Wizard is trying to make a difference. And he will definitely get that opening on towards mid, which in turn puts us that Team Nepal and India have equal chances of winning this round. But Spawn on the other hand just changing things, gets 2 headshots, gets traded by Wizard, not a problem at all. It's still a 1v2 situation. And what do you think, Upcon? क्या निकेश ये 1v2 निकाल पाएंगे? Unfortunately, no. 14-6 and सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये था जब आपके पास 40 seconds remaining है, you tend to realize that you get yourself in a 1 versus 2 while the
C4 was all the way towards spawn. वो बैक करना होता जब तक बी साइड पे वापस आते रोटेशंस आ चुका होता, बट टीम नेपाल बहुत अच्छा राउंड किया. डीलर ने फर्स्ट पिक ऑफ निकाला. आई थिंक यहाँ पे हमें स्पॉन द्वारा 2 या 3 के देखने को मिले थे. स्टार्टिंग राउंड में यहाँ पे पहला किल निकाला था, वो 2 मैसिव किल, बट उसके बावजूद यहाँ पे राउंड को क्लोज आउट करने में सक्षम हुई है टीम नेपाल. स्टिल एबल टू डिनाई दैट मैच पॉइंट, बट अब यहाँ पे ऑरस की लाइक जीवित रहने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी. डीलर के पास AWP जरूर है. टीम फ्लैश की वजह से यहाँ पे जरूर कुछ रोटेशंस करने का मौका मिल पाएगा, बट अब इस 3v5 में आई डोंट थिंक इतना मुमकिन होगा. आई थिंक डीलर पहला किल निकालने में जरूर सक्षम हुआ, बट एक डबल AWP सेटअप आया है. 1 वर्सेस 3, 2 बड़े शॉट्स का यहाँ पे इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है ऑप्स द्वारा. एंड रियल गेट्स 2 फॉर हिमसेल्फ. 1v2 के सिनेरियो में रीटेक करने के लिए वो दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया से आपको सिटी साइड पे देखने को मिल रहे हैं. अब सिटी एंड टिकट के एरिया को होल्ड करना आई थिंक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है. स्मोक्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. इसी के साथ क्लाउडा वो फाइनल खिलाड़ी को डाउन करके टीम इंडिया को मैच पॉइंट की तरफ पहुंचा चुके हैं. 1 more round away it is Team India from winning this matchup against Team Nepal. एंड आप प्लेयर्स की बात करें तो आई थिंक डेफिनेटली एसके वो फायर्ड अप. वो 2 शानदार खिलाड़ी इस प्लेयर से जो कि आपको टॉप ऑफ द बोर्ड भी देखने को नहीं मिल रहे. मोस्ट ऑफ द हेवी लिफ्टिंग इज बीन डन फ्रॉम द साइड ऑफ निकेश विद 23 किल्स. देन यू हैव क्लाउडा एंड देन नॉनदलेस स्पॉन जो कि बहुत इनक्रेडिबल फॉर्म में नजर आ रहे. बट डीलर, व्हाट इज दैट हेडशॉट? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंसेन हेडशॉट यू कुड सी while you are playing on a scout. एक ऑफ भी नहीं, एक स्काउट से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस. आई थिंक डीलर जरूर एक बहुत अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं. टीम नेपाल आई थिंक दे स्टिल हैव सम होप्स अलाइव, बट फायर्ड अप तुरंत ही यहाँ पे डिनाई करते हुए आपको देखने को मिलते हैं. और इट्स डाउन टू 3 वर्सेस 4, स्टिल डुएबल, क्योंकि पीछे से देखिए आपको एक नेपाल के प्लेयर द्वारा पुश देखने को मिल रहे हैं मेन पे बैक स्टैप. Yep, that is definitely true. It's going to be a crucial round for Team Nepal if they make that backstab happen. But luckily, Team India has already moved towards Tetris, and one shot from A-main. Team India will be alerted. Wizard, on the other hand, definitely gets headshot on towards spawn. Dealer gets another wall through, and so does Team Nepal. Finally managed to get the victory on this round, delaying the victory for Team India. Yet Team India is still on advantage. AFCON 15 राउंड उनके हाथ में मैच पॉइंट पे बैठे हुए. टीम नेपाल चाहे कितना भी डिले कर ले, until and unless they make it to an OT, Team India still has 100% chances of winning this map. जैसे कि ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज है, टीम नेपाल के पास भी टाइम. even if they lose the first map or even if Team India loses first map, there are 2 more maps that these teams can concentrate on. बट ये वाला राउंड बहुत इजी होने वाला है टीम नेपाल के लिए, बिकॉज इट्स एन इको राउंड कमिंग इन फ्रॉम टीम इंडिया. फाइड अप के हाथ में अभी फिलहाल के लिए तो डीगल है, एंड ही हैज ऑलरेडी गॉट अ ब्यूटीफुल एंट्री फॉर टीम इंडिया. दे पुश डाउन टुवर्ड्स बी बॉम्ब साइड, एंड बी शॉट में 1 HP के साथ जेडी बचे हुए थे. क्लाउडा विद अ डबल किल, और इस इधर आए हुए बी शॉट पे रेस्क्यू के लिए. बहुत ही बढ़िया उन्होंने किल निकाला है, ट्रेड लिया है. बी बॉम्ब साइड पे फायर्ड अप अभी भी डीगल के साथ बी शॉट पे पीक कर रहे हैं. डीगल वर्सेस M4, व्हाट इज इट गोइंग टू बी इज माय क्वेश्चन. बट ईदर वे बॉम्ब तो ए पे प्लांट हो चुका है. इट वाज ऑल अ डिस्ट्रैक्शन, एंड फायर्ड अप गॉट द मोस्ट ऑफ इट. डीलर इमीडिएटली रोटेटिंग थ्रू जंगल. It's a 2v2 situation right now. Dealer has taken down SKO. Fired up ने immediately trade कर लिया है, which puts it down to a 1v2 situation. Dealer, he has taken all the info he can, but there's going to be one player over towards connector who's waiting for him. से कॉल आ चुका है कि अभी तक स्पाइक अपने तरफ से हुआ नहीं है कोई भी प्लेयर द्वारा वो गेम. एंड इसी के साथ फायर अप कम्स अप थ्रू द स्टेयर्स, टेक डाउन द फाइनल प्लेयर, एंड टीम इंडिया अपने द्वारा अपनी जीत को पूरी तरीके से दर्ज करेगी अगेंस्ट दिस सीरीज में. राज कबाब 16-7 के स्कोर लाइन से टीम इंडिया अपने द्वारा जीत हासिल करते हुए देखने को मिले. एंड व्हाट अ मैच इट वाज, व्हाट एन इनक्रेडिबल प्ले विद निकेश ड्रॉपिंग 25 किल्स. दैट इज जस्ट मैसिव. आई मीन ये खिलाड़ी, एक पूरी जो स्क्वाड आपको टीम इंडिया की देखने को मिल रही थी, दे आर लुकिंग सो सेट, एंड दिस इज रियली कॉन्फिडेंट. टीम इंडिया इज इंडीड डेडली वन इफ यू आर प्लेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्वर अगेंस्ट देम, बिकॉज डीलर आई थिंक इज वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स फ्रॉम टीम नेपाल जो हमें देखने को मिले.
immense, like फायर पावर जो उन्होंने इस पूरे के पूरे मुकाबले में लाया, इट केप्ट द होप्स अलाइव. आप ये नहीं कह सकते कि एक वन साइडेड गेम था. टीम नेपाल हर एक राउंड अगर हम रिवैम्प करें, इट केम डाउन टू अ 1v3, इट केम डाउन फ्रॉम अ 1v3 टू 1v1, जहां पे नेपाल के एक एक खिलाड़ी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज ला पा रहे थे हर एक राउंड को. बट इवन आफ्टर दैट हर बार टीम इंडिया के पास वो एक्सपीरियंस का जो फैक्टर आता है ना, वो एक बहुत अच्छा कंपेटिटिव एज दे दिया. टीम इंडिया को वो जीत भी हासिल करने का मौका मिला. मिराज का मैप तो देखिए पिक नहीं, बट साइड जरूर आपको टीम इंडिया द्वारा देखने को मिली थी. एंड इंडीड दे प्लेड इट रियली फ्लॉलेसली. आई मीन 16-7 is really a big lead to win with. Yes, definitely. And since the beginning of the match, मेरे को थोड़े expectations थे टीम इंडिया के तरह से, because they've been playing for almost a month as together as a team. So I think all the communications, as you said, all the team building that they have done through the experiences of all the matches and qualifiers they've gone through in India definitely gave them an upper advantage in today's match against Team Nepal. But Team Nepal, they put up a good fight as well, considering the fact that Team Nepal, I mean, recently practice करना शुरू किए थे. Team India के against उन्होंने बहुत ही अच्छा fight लिया है. And anyway, ये तो एक ही मैप है तरुण, अभी बहुत सारे मैप्स आने वाले हैं. वी स्टिल हैव 2 more maps left to crown the champion for current BO3. And anyway, this is the second practice match that Nepal is taking right now, and they have still 2 more matches left, I believe. आई थिंक जरूर एक बहुत इनक्रेडिबल लाइक सीरीज जरूर रहेगा इंडिया नेपाल के फैंस के लिए स्पेशली, जो कि आपको आज ट्यूनिंग करते हुए नजर आए. दोनों ही तरफ से आपने देखा बहुत क्लोज गेम. इंडिया डेफिनेटली विनिंग इन विद 9 राउंड्स ऑफ लीड. लाइक दैट्स अ बिग लीड, स्पेशली इफ यू आर डाउन 3-0. 9 राउंड कंसेक्यूटिव जीता, एंड किसे पता था कि वही 9 राउंड की लीड इनको यहाँ पे मिराज के मैप पे जीत दर्ज करने का मौका देगी. बट आई थिंक विद दैट वी माइट रियली गो ऑन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एट दिस पॉइंट. एलिका, वुड यू लाइक टू call out anything before we head on to a break? Yes. There's a little correction over there, guys. So we have converted the best of 3 into a best of 1 matches due to a lot of tech issues happening today. But don't worry, guys. We still have 2 more friendly matches left for Team Nepal. So I guess we'll be taking a short break right now. Thank you guys so much for tuning in. Yeah.